बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन। आप तमाम व्यूवर्स को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जो व्यूवर्स भी इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं। आज की वीडियो में आपके साथ चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि एसएस लेक्चरशिप केमिस्ट्री और एमडीके टेस्ट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल particle from liquids? The right answer for question number 1 is option A, filtration. Question number 1, right answer is option A, filtration. Question number 2, which of the following way is used for classification of chromatography? The right answer for question number 2 is option B, phase. Question number 2, right answer is option B, phase. Question number 3, fluted filter paper is used to. Dear viewers, अगर आपको इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके पास जो है वो 10 सेकंड का टाइम है, आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज़ यूज टू। ऑप्शन ए, फिल्टर hot solution. Option B, avoid premature crystallization. Option C, increase the rate of filtration, and option D, decrease the area. The right answer for question number 3 is option C, increase the rate of filtration. Question number 4, safe and the most reliable method of drying crystal is through. The right answer for question number 4 is option B, vacuum desiccators. Question number 4, right answer is option B, vacuum desiccators. Question number 5, a substance having very high vapor pressure at its melting point on heating will show. The right answer for this question number 5 is option B, sublimation. Question number 5, right answer is option B, sublimation. Question number 6, a process controlled by distribution law is. The right answer for question number 6 is option C, solvent extraction. Question number 6, right answer is C. Question number 7, a technique of partition chromatography in which the solvent is in a point at the bottom of container. The right answer for question number 7 is option B, ascending chromatography. Question number 7, right answer is B. Question number 8, different compounds of a mixture have different RF value due to. The right answer for question number 8 is option C, their different distribution coefficient in the solvent. Question number 8, right answer is C. Question number 9, branch of chemistry that deals with the complete qualitative and quantitative analysis of a substance is. The right answer for question number 9 is option C,
दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, analytical chemistry. Question number 9, right answer is C. Question number 10, identification of the component of a sample is, the right answer for question number 10 is option B, qualitative analysis. Question number 11, right answer is A, and question number 12, right answer is C. Next is the question number 13. The solid which is left over the filter paper as a result of filtration. The right answer for question number 13 is option B, residue. Question number 13, right answer is option B, residue. Question number 14, size of filter paper is selected according to the amount of. The right answer for question number 14 is option B, amount of insoluble solute. Question number 14, right answer is amount of insoluble solute. Option B is correct. Question number 15, which crucible are made up of? The right answer for question number 15 is option C, question number 15, right answer is option C, porcelain. Question number 15, right answer is C. Question number 16, rate of filtration can be increased by applying gentle suction. The right answer for question number 16 is option B, filter paper. Question number 16, right answer is option B, filter paper. Question number 17, centered crucible is made up of. The right answer for question number 17 is option B, glass. Centered crucible is made up of glass. Right answer is B. Question number 18, the up of funnel should touch the wall of beaker in order to avoid. The right answer for question number 18 is option B. Question number 18, right answer is option B. Question number 19, separation of a solid from its hard saturated solution by cooling is called. The right answer for question number 19 is option D, crystallization. Question number 19, right answer is crystallization, option D. Question number 20, in crystallization, if the solvent is inflammable, then direct heating is. Question number 20, right answer is B. Question number 20, right answer is option B, avoided. Avoided is the right option for question number 20. Question number 21, which of the following technique is simple and efficient to purify a substance? The right answer for question number 21 is option D, solvent extraction. Question number 21, right answer is option D, solvent extraction. Question number 22, in a solvent extraction, ether is used to separate products of organic
दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये तमाम MCQs जो है चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था दोस्तों। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ईथर इज यूज टू सेपरेट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, 95% ethanol is called. The right answer for question number 23 is option C, rectified spirit। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है दोस्तों, बहुत से टेस्टों में आ चुकी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 24, the use of calcium chloride and PCl6 in the process of crystallization is as a। The right answer for question number 24 is option C, drying agent। Question number 24, right answer is C, drying agent। Question number 25, ratio of the amount of solute in organic and aqueous solvent is। The right answer for question number 25 is option B, distribution coefficient। Question number 25, right answer is option B, distribution coefficient। Question number 26, without suction pump filtration is। Right answer for question number 26 is option B, slow process। Question number 27, right answer is A। Question number 28, right answer is option B। नेक्स्ट पेज पे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 से 40 तक जो क्वेश्चन है उनके करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन बी, sublimation। Question number 29, right option is B, sublimation। Question number 30, in CCl4 I2 shows। The right answer for question number 30 is option B, purple color। Question number 30, right answer is option B, purple color। Question number 31, repeated extraction using small portion of solvent is more। The right answer for question number 31 is option B, efficient। Question number 31, right answer is option B, efficient। Question number 32, silica gel and alumina are used as। The right answer for question number 32 is option B, stationary phase। Question number 32, right answer is option B, stationary phase। Question number 33, shaking to immiscible liquid increases। Right answer is option C, area of contact। Question number 33, right answer is option C, area of contact। Question number 34, the solvent or mixture of solvents used for separation of compound is called। Right answer for question number 34 is option B, mobile phase। Question number 34, right answer is option B, mobile phase। Question number 35, which is not a sublime material। Right answer is option D, potash alum। Question number 35, right answer is D, potash alum। Question number 36, centered glass is a porous material used for। Right answer for question number 36 is option C, filtration। Question number 36, right answer is option C, filtration। Question number 37, selection of filter paper depends on size of particle to be।
Right answer for question number 37 is option A, filtered. Question number 37, right answer is A, filtered. Question number 38, the solution remaining after the formation of crystal is called. Right answer for question number 38 is option A, mother liquor. Question number 38, right answer is option A. Question number 39, which is not related pair of term used in analytical techniques. Right answer is option B, sublimation, sublimate. Question number 39, right answer is B. लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 4. The major steps involved in complete quantitative analysis are ऑप्शन सी, 4. तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट 40 MCQs थी उनके करेक्ट ऑप्शन डिस्कस किए. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक लग रही हो तो आप अपना करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. ये जो MCQs हैं ये SS केमिस्ट्री, लेक्चरशिप केमिस्ट्री और MD के टेस्ट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग.